Hello and welcome to the highlights of the third and final ODI in the Trans Group Pakistan versus Sri Lanka from South End, Karachi. At the flip of the coin, Sri Lankan skipper won the toss yet another time and opted to bat first. Here's a look at the two teams. Sri Lanka have made one change to their final 11, benching Sachini Nisansala to bring in slow left arm Sugandhika Kumari. Pakistan as well made one change to their lineup to strengthen their bowling with slow left arm Anam Amin in place of Sadia Iqbal. So we are all set. Let's join the comms for the action. Yeah, play. And play is the call. Here we go. Nice fuller length from Diana Baig. She's been out of rhythm in this series. That shape once again. That is the reason the fine leg is wider. Still on the excellent return and out. Wow, Asif Yaqub was in perfect position to make the judgment on that one, but the throw was absolutely superb, right on top of the stumps. And Sidra Nawaz has got very quick hands as well. She whipped the boils off in a flash. It'll be an interesting replay, but Pakistan are off and running. Once again, the wretched run out, 11th for Sri Lanka. Just on this tour. Just look at this great throw. Fatma Sana. And right on top of the stumps, no problem for Sidra, who's just been fantastic. And that's the finger gone up. Once again, a terrible run out, 3 for 1, Sri Lanka. And gets that ball to turn. She really causes trouble. Big shot, and the finger has gone up. That was the quicker delivery. It came in with the arm, and Hansima had no clue what was happening. Trapped right in front, back in the crease as well. Probably an easy decision for Asif Yaqub. Flighted, pitched up, trying to play the ball across the line and gone. The number 3 batter had no answer to Anam's flighted delivery coming in with the arm. Good drift for the bowler. 4 for 2 Sri Lanka. With an offer, flays it through the offside. Right off the meat by Chamaria Tapatu. Somewhere near her best. Firm sweep, found the gap. No protection at this stage of the innings. She finally breaks the shackles. Anam Amin straying slightly in line. तो क्या चमारी आता पातू भी ऐसा कुछ कर पाएंगी? हाँ, ये बड़ा शॉट है, ये शानदार शॉट है, ये बॉल चला जाएगा ग्राउंड के बाहर. पहला छक्का चमारी आता पातू के बैट से. चमारी ने शॉट एग्जीक्यूट किया, जल्द पिकअप किया उन्होंने इसकी लेंथ को और उसके नीचे आकर स्टैंड एंड डिलीवर. नेम ऑफ द गेम बना श्रीलंकन कप्तान के लिए. एलिवेशन ज़्यादा दी लेकिन ठीक एरिया का इंतखाब किया. कदमों का इस्तेमाल किया है और बहुत शानदार तरीके से टाइम किया है. बॉल चली गई है गैप में. ये शायद 4 रन हो जाएंगे. इतना शानदार टाइम किया हुआ ये शॉट चमारी आताबादू की जानिब से. प्लेसमेंट भी शानदार रही, रिजल्ट भी शानदार रहा. एक मरतबा फिर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया अपने लिए हर्षिता ने और अब रोकने में कामयाब नहीं हो सकेंगी. बहुत बड़ा चेस होता है अमीन के लिए लेकिन उसके करीब ही ना पहुंच पाए. खूबसूरत प्लेसमेंट के जरिए से हर्षिता ने अपना दूसरा चौका हासिल किया और श्रीलंका अपने पहले माइलस्टोन को मुकम्मल कर गया. 50 तक पहुंचा है शानदार शॉट के जरिए से. और पाकिस्तान पे प्रेशर डालें. ये एक बार फिर शानदार शॉट, गैप में चला गया बॉल. ये खराब बॉलिंग निदा डार की जानिब से. जब आप यहाँ बॉल करेंगे तो रन जरूर मिलेंगे. 4 रन हासिल हो गए. Straight over the bowler's head. Has she found the connection? Yes, she has. Not all the way through, but enough. Hops over the boundary for 4 runs. Straight bat. Beautifully played. One of the best shots for today. Chamaria Tapatu on the roar. Down the track, Chamari this time. Oh, poor fielding. Sidra Amin wanted to cut it with the slide.
But it's the 50 for Chamari Atapattu. First 50 of this tournament, of the series rather, and she is relieved, but she needs to keep on going. Fabulous knock by Chamari Atapattu. Turned it into a juicy full toss. And that's beaten. Muniba Ali trying to contain that boundary, but it was hammered for another 4. 8 runs off the over, 1 to go. That shot in wide. The fielders will have to do some work, but for no use. It's in the gap. Back-to-back boundaries for Chamari to bring 21st over at the end. Sri Lanka 99 for 2. और उसका नतीजा भी पाया अच्छे स्कोर की सूरत में. 2 कदम आगे आकर स्मैश किया इसको हवा में और खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया. ऑफ स्टंप के बाहर की इस मुसलसल लाइन का श्रीलंकन कप्तान ने पाकिस्तानी स्किपर को इस बैटल को विन करते हुए चमारी शानदार चौका. एक मरतबा फिर पूरा स्ट्रेच करके शॉट को एग्जीक्यूट किया है और चमारी का बल्ला रन उगलने में एक मरतबा फिर कामयाब तवातर के साथ ये चौके हासिल हो रहे हैं. एक मरतबा फिर उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को आड़े हाथों लिया और एक और चौका. रिवर्स अटेम्प्ट किया और क्या शानदार अंदाज से उन्होंने गैप तलाश किया है. गुलाम फातिमा गेंद के पीछे, गेंद आहिस्ता होने के बावजूद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी. हर्षिता हौसला पकड़ते हुए अपने कप्तान के साथ शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत की है. यह गेंद लो बाउंस के बावजूद तैयार थी चमारी फास्ट बॉलर का इस्तकबाल करने के लिए. स्पेल की पहली गेंद पर चौका हासिल किया. एक मरतबा फिर सिमिलर एरिया का इंतखाब किया है और एक और लंबे चेस के बावजूद फिर नहीं रोक पाएंगी. बैक टू बैक चौके श्रीलंकन कैप्टन के लिए और फास्ट बॉलर का आना पाकिस्तान के लिए कदर मौजूद साबित नहीं हुआ. जाना बेग ऑन द बैक फुट. ओवर कंपनसेट कर दिया इस मरतबा विथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप और फिर इसे निकाल दिया 4 रन के लिए. चमारी अतापत्तु ऑन फायर. खूबसूरत शॉट के जरिए से चमारी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली और करियर की 6ठी सेंचुरी मुकम्मल की है. वेल डन टू श्रीलंकन कैप्टन. मैजिकल इनिंग्स बाय चमारी अतापत्तु. ये देखिए इतना जबरदस्त इनिंग्स खेलने के बाद बिल्कुल अपने जज्बात का उन्होंने इजहार किया कि अपनी परफॉर्मेंस से वो कितनी मायूस थी इस सीरीज में और इस सीरीज के खात्मे से पहले वो इस सीरीज पर अपना मार्क छोड़ना चाहती थी और आज उन्होंने एक ऐसी वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली कि जिसने भी वो इनिंग्स देखी है वो उन्हें हमेशा याद रहेगी. फाइनली श्रीलंकन कप्तान को सेंचुरी मुकम्मल करते ही आउट करने में कामयाब. निदा डार को वापस लाना पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हुआ और अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इनवाइट किया इस फ्लाइट के साथ श्रीलंकन कप्तान को कि वो शॉट खेलने के लिए जाएं. मुकम्मल तौर पर मिस कर गई और बाकी का काम परफेक्टली किया स्टंप्स के पीछे, लेकिन एक टॉप इनिंग्स खेलकर आउट हुई हैं चमारी. बहुत ही शानदार डिलीवरी भी थी. निदा डार की गेंद को उन्होंने ऊंचा हवा में फेंका, एंगल के साथ दूर जाती गई. सिद्रा नवाज ने स्टंप्स को मिस किया लेकिन चमारी अतापत्तु बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी और ये निदा डार की सेलिब्रेशन का मखसूस अंदाज. लेकिन जबरदस्त स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी चमारी अतापत्तु को. इन्होंने आज एक वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली यहाँ पे साउथ एंड क्रिकेट क्लब में और उनके टीममेट्स और तमाम देखने वाले नाजरीन ने बहुत एंजॉय किया उनकी इनिंग्स को. 101 पर आउट होकर पवेलियन वापस. श्रीलंका 156 पर 3. That is maiden ODI 50 for Harshita. She has played a brilliant knock alongside the captain. She's understood her role. She's been there with the captain. Such a remarkable achievement. They both have saved the best for the last. Oh, nicely done. That is through the gap. Played it late. This should. Gulam Fatma. Oh, she did well, but off no way. That has gone for a boundary. That is an excellent start for Kavisha. We've seen that she plays this shot very nicely. When she can't really perform up to her potential. Oh, that's true. That's poor fielding and poor bowling as well. Way outside off stump on the shorter side. It was meant to be punished. Ordinary work again.
Well, that's unlucky for Fatma. Again getting the shape, but just straying down the leg side. Beats Fatma Sana as well. Sidra Nawaz, and that's leg buys. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है और मुझे बहुत हंसी आती जब कोई ये कहता है, क्योंकि अगर आप सेट होंगे तो और ये ससना में आउट. रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करने के लिए गए हर्षिता. अपने करियर में पहली मर्तबा 50 रन का सफर उन्होंने हासिल किया है. और अनम अमीन ने, जिन्होंने अपने पहले स्पेल में विकेट हासिल की और आखिरी स्पेल में आकर एक मर्तबा फिर इससे पहले मेडन फेंका, और अब उन्होंने ये ऑल इम्पॉर्टेंट सेट बैटर की विकेट हासिल की है. पूरा वाइल्ड स्विंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल स्टम्प्स के सामने मौजूद पाया और आसिफ याकूब को किसी तरद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा. ब्रेक्स लगाने का बेहतरीन मौका पाकिस्तान के पास. हर्षिता अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेलकर आउट. 216 पे 4. वो जरूर इंपैक्ट क्रिएट करेगा. हवा में खेला है और क्या खूबसूरत कैच लेकर इस इंपॉर्टेंट विकेट को अपने नाम कर लिया उमैमा सुहेल ने. गेंद कुछ देर तक हवा में रही, लेकिन इस पर नजरें जमाए रखी मुनीबा ने और अपने महफूज हाथों में मुंतकिल किया. पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया. इस गेम में कविशा की आखिरी लम्हात में अहम विकेट हासिल की. बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी ये, और कविशा जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लॉन्ग हैंडल यूज करेंगी, आउट हुई. बेहतरीन कैच लिया मुनीबा ने, जो विकेट कीप भी करती हैं. डाइविंग कैच, जबरदस्त विकेट. और यहां से अब श्रीलंका का जो ग्राफ है नीचे जा सकता है. 220 पर 5 खिलाड़ी आउट. They're happy. For the first time I'm seeing Dilshan happy. That's nicely swept. Right in the gap. This is a boundary, a much needed one for Sri Lanka. They've been dealing in singles, but this will definitely help them a lot. Off the pad. Fine leg was up in the ring and it will trickle over the fence. Leg buys, but Sri Lanka wouldn't mind. 250 is up. Nick and gone. Fatma Sana with her variations was able to fox the batter, and an easy one for Sidra Nawaz. Pakistan's ace quick bowler strikes in the final over. That's very clever. Very clever by Fatma Sana. You're realizing that the batter is going to go towards mid-wicket. Have a look at that. Slower one, a cutter, and the length she bowls at. It's the best part of this. She's happy. Why not? She's bowled well. She's bowled her heart out. She's got the first wicket. Anushka Sanjivani, 9 runs. It's 251 for 6 from here. Off the edge. Will it go through the gap? Yes, it does. And we'll have enough legs to carry it over the fence. Second boundary of the over, off the thick outside half of the bat, but Sri Lanka will take it. Knocked her over. This is superb from Fatma Sana. Right arm around the wicket, angling in and aiming for the base of the stump, and knocked over the off stump. Brilliant. Brilliant Fatma Sana. We've been talking about her abilities to bowl those Yorkers with the old ball. She's been magnificent. Have a look at that. Right there in the block hole. Timbers. Another one for Fatma Sana. Second of her inning. Strike rate of 200 for Oshadi Rana Singh. She's gone for 4 of 2. 255 for 7. Strong blow. It cleared the infield. No protection on that side, and the innings will end with the boundary for Sri Lanka. And they got to that psychological number of 260 thanks to that boundary from Nilakshi. She's played a little cameo towards the end, and Sri Lanka to a very, very decent total. Chamari Athapattu had to save it for the last with a dazzling 6th century of her career. Alongside Harshita, Madhavi gave her full support with 75 runs. Sri Lanka have posted the biggest total of the series with a 260. Pakistan had a rough outing with the ball. Despite taking 7 wickets, their bowlers leaked far too many runs. Anam Amin and Fatma Sana were the pick of the bowlers, taking 2 wickets apiece.
So the target for Pakistan was 261. Let's go see the reply. Pakistan has a huge task ahead of them. And off we go with the chase. Good length to start with. No room given to Muniba. She likes to dominate on the back foot, searching for room outside off stump. Bridged up and flicked nicely. It's going to run away for the first boundary of the match. Perfect timing from Muniba Ali. Gets off the mark with a 4. Fantastic shot. Beautiful timing. Flicked it. And flicked it nicely into the gap. Just hopping away. Will it reach the boundary? Oh, brilliant effort. But I think it's for no use. It was good effort, but Sidra Amin gets her first boundary. Outside off stump. That's where she likes it. And that's where she's going to punish you. Cracking off the bat. Raced away for another 4. Back to back for Sidra Amin. Oh, that's through. Hammered through the offside. Easy pickings for Sidra Amin. Oh, impeccable timing from Muniba. Just stand and deliver with a straight bat. What a beautiful shot was that. Sweeping it. They're going up. And the finger goes up as well. Golden arm of Chamari Atapattu has worked. Sidra Amin. It wasn't the length to sweep. Has to pay the price. 1 down for Pakistan. Sidra Amin gone. She was one of the main hopes of Pakistan, batting in rich vein of form. Trying to play this through mid-wicket. And she was playing across the line and was given out. Gone on 19. Pakistan 41 for 1. Down the track. Oh, confusion, and she's gone. Another blow for Pakistan. Muniba Ali fell short of crease. Utter confusion in the middle. Stop and run, and the result is a run out and a wicket of Muniba, who was playing well and not happy with that. But nothing you can do if your captain is calling you. What a run out. Chamari Atapattu yet again. That is her day today. Muniba back in the hut, scoring 16. Pakistan 42 for 2. Oh, boulder! Beauty from Ushadi. The bat and pad gap has done the work. Bisma Maroof, the big one, is gone now. Pakistan in deep trouble. Here's the wicket. Bisma beaten, all ends up and gone. Big wicket, big wicket. Oh, Pakistan in trouble. Disappointment for the captain, gone on duck. Pakistan 43, 3 down. अपील और आउट. बैकफुट पर लगा बॉल और ऐसा लगा बिल्कुल विकेटों के सामने थी निदा डार और क्रीज के ऊपर थी बिल्कुल. और चमारी आतापाथु, इनका दिन है आज, चाहे बल्ले के साथ हो या गेंद के साथ ये फील्ड में. और पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका लगा यहां. तजर्बेकार निदा डार, जिनसे काफी उम्मीदें थी, वो आउट होकर वापस. एक और गेंद लो ट्रैजेक्टरी के साथ, जिसको खेलते खेलते अपनी क्रीज में स्टक रह गई निदा डार. बड़ी विकेट जो कि इशू को सेटल कर देगी अनलेस पाकिस्तान एक बड़ा कमबैक कर पाए. लेकिन शायद पाकिस्तान की उम्मीदों के एक बड़े मरकज़ को भी अपने साथ ले गई निदा डार. जबकि चमारी अतपतु की एक और कामयाबी, एलबीडब्ल्यू आउट किया पाकिस्तान 48 पे 4. ये नज़र में रखते हैं कि दोनों की शायद कॉल हो और वहीं कंफ्यूजन होती है. बाहरी किनारा लगा, गेंद स्लिप के पास से होती हुई निकल गई तेजी के साथ. बिल्कुल रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला. हाई बैक लेफ्ट के साथ
पूरा ड्राइव खेला लेकिन बाहरी किनारा लगा. Lucky boundary. She has a responsibility too. Oh, that's edged. Thick edged. It has got pace. This will run away for a boundary. So much needed boundary for Umema. That was a good shot. Our girls are very well spoken. They speak perfect English. Our 4 runs, and that's a good shot. Meanwhile, that's nicely done. Again, nicely swept right between the 2 fielders. This is classical. This is gorgeous. Right between the 2 fielders. The placement was perfect. The result is perfect. Another boundary for Umema. You're very humble. Extremely humble. And that's nicely hit. And it's going to go for a boundary through the mid-wicket area. Fantastic shot. Nicely played. Umema in full flow and form. और रिवर्स अटेम्प्ट किया था इस बार और गलती कर बैठी. चॉप ऑन कर दिया उमैमा सुहेल ने. 5वां झटका पाकिस्तान को. अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. बड़ी विकेट सेट होने के बाद उमैमा की इस इनिंग्स पे पानी फिर गया. रिवर्स शॉट खेलने के लिए गई लेकिन ड्रैग करके उन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी दे मारी और बड़ी विकेट श्रीलंका के लिए जो कि शायद इशू को सेटल करेगी. बड़े रन्स हासिल करना चाहती थी. अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं थी तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश की लेकिन अपनी विकेट से हाथ धोना पड़े. बड़ा नुकसान पाकिस्तान को. एक अच्छी इनिंग्स खेलकर उमैमा 61 पे 40 बनाकर आउट. 4 चौके इनकी इनिंग्स में मौजूद. पाकिस्तान की आधी टीम वापस 112 पे 5. स्वीप मार दिया. क्लोज कॉल हो सकती है और यकीनन क्लोज कॉल थी. सिद्रा नवाज चलती बनेंगे इस बार और एक और नुकसान पाकिस्तान को. सिद्रा नवाज स्ट्रगल कर रही थी रन स्कोर करने के लिए. गेंद की लेंथ को मिस कर बैठी और दूसरी तरफ कविशा दिलहारी अपने दूसरे स्पेल में शानदार कमबैक करने में कामयाब. इस स्पेल के पहले ओवर में 2 रन दिए और अब इस अंदाज से उन्होंने बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़ लिया सिद्रा को जो कि स्वीप शॉट खेलने के लिए चले गई. ऑल एंड अप मिस किया. इस गेंद को मिडिल स्टंप के सामने मौजूद पाया. इम्तियाज इकबाल को किसी तरह का सामना नहीं करना पड़ा. 7 रन बनाकर आउट. पाकिस्तान मुश्किलात के भंवर में 125 पे 6. With an offer this time, she struck it sweetly and this time it will go over the fence. First boundary after 83 balls and Alia Riaz finally breaks the shackles. Another full toss, couldn't make use of that. Fatma Sana looking for the second run chance and gone. I think she's disappointed, but umpire was in a great position as the throw came on the bounce. And Fatma Sana, who's looking for the second runs, was sent back by Alia Riaz. And another wicket for the Sri Lankans, who are really jubilant in the field. And they deserve to be in this strong position. That's the run out. When the run rate is climbing up, you need to get runs, and that is what they were trying to do. There weren't 2 runs in it, and the run out brings the demise of Fatma Sana. Very poor running from Alia Riaz. She barely was looking to come back for that second run. She didn't run the first run hard. And Fatma Sana paid the ultimate price. She's gone for 12. And Pakistan 155 for 7. This is beautiful. Straight down the ground. Long off is pretty straight. Chance at the non-striker end again. Diana Baig is short. The throw on the bounce. Diana took the chance on the arm, but the throw was good. And Pakistan is really buckling under pressure. Diana Baig walks back without facing a ball. That wasn't great running. Should have been 2 runs. It's a very good shot actually by Alia. Deserved much more than that. But she got just a single in the end. 2 runs definitely deserved. 2 runs deserved 4 actually. The shot. Gone for a diamond duck. 157 for 8.
Nicely swept by Alia Riaz. That will bring up her 50 as well. He's really looked out of rhythm, but she hung in there and brought up her 6th half century of her international career in ODI cricket. ये शानदार शॉट है, सीधा मारे हैं, बहुत ही कमाल का शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। शायद अब आलिया ने सोच लिया है कि दूसरे एंड से तो विकेट्स गिर रहे हैं, एक एंड से चार्ज किया जाए। एक बार फिर बड़ा शॉट मार रहे हैं, हवा में खेलें, ये फील्डर मौजूद है और आसानी से ये कैच लेकर आलिया की इनिंग का इख्तिताम किया। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी बड़ी हिट मारने के अलावा और अपने विकेट गंवा बैठी। उम्मीद की आखिरी किरण के तौर पर वापसी की राह अख्तियार की आलिया रियाज ने। बड़ी मेहनत के साथ ये वक्त गुजारा था, लेकिन अपने पार्टनर्स को खोती चली जा रही थी और आखिर में जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था, उन्होंने इस डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफ़र बाकी था। एक मरतबा फिर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो एलिवेशन ना दे सकी। अब पूरा ऊपर वो वाइल्ड स्विंग जो कि रिक्वायर्ड था लॉन्ग ऑफ के ऊपर मौजूद फील्डर को क्लियर करने के लिए, वो भी ना मिल सका। तो कैच हासिल किया नीलाक्षी ने, लेकिन एक शानदार इनिंग्स खेलकर वापस हुई हैं आलिया रियाज डगआउट में 166 पे 9। फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट होगी मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए। अपील की है, बड़ी अपील जी, अंपायर ने कहा ये आउट है और इसके साथ ही श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया और अपनी पहली कामयाबी 10 मैचेस के बाद हासिल की यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ। एक बहुत ही शानदार टीम एफर्ट जिसे कहेंगे, जिसे लीड किया बहुत शानदार तरीके से चमारी अतापातू ने। सितंबर 2018 के बाद पहली कामयाबी यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल में हासिल की श्रीलंका की टीम ने। और पाकिस्तान के लिए शायद अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इस मैच में, पहली बार यहाँ पे कोई मैच हारे हैं पाकिस्तान। क्राउड यहाँ पे एक अच्छे तरीके से दोनों टीमों को दाद देते हुए, बहुत शानदार सीरीज़ रही है ये दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान ने दोनों सीरीज़ पहले T20 और अब ODIs दोनों सीरीज़ अपने नाम की हैं, लेकिन ये मैच श्रीलंका ने जीता है 93 रन से। Sri Lanka have comprehensively defeated Pakistan the last game of the series, winning this by 167 runs in the chase. Losing regular wickets for Pakistan in the process, Alia Riaz tried to salvage the situation but in vain with a 56. Besides her, most of the batters missed out on this opportunity to score. Sri Lanka bowled extremely tight to reduce the match to 41 overs. Ushadi Ranasinghe and Chamari Athapattu have picked 2 wickets apiece. Well, here's a match summary of the 3rd ODI, and Sri Lanka have won this by 93 runs. Hope you enjoyed the highlights and the series. Looking forward to have you back. Till then, it's goodbye.